नमस्ते मेरे देशवासियों। तो शुरुआत करते हैं आज की 18 अक्टूबर के साइंटिफिक न्यूज़ और स्पेशल इवेंट्स की, सिर्फ हमारे चैनल पर जिसका नाम है सुप्रभात। तो एक चार्मिंग इवेंट से, एक चार्मिंग साइंटिफिक न्यूज़ से, एक चार्मिंग डे से और एक चार्मिंग नॉलेज से हम हमारे साइंटिफिक न्यूज़ की और स्पेशल इवेंट्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं ऐसे एक अमेजिंग नॉलेज और ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है जो कि है Put into music telescope observations of the center of the Milky Way create a triangle tune, glittering with the xylophone and piano notes. The iconic pillars of the creation in the Eagle Nebula meanwhile sound like an eerie sea-wave score, and the supernova remnant Cassiopeia A is sweeping symphony. This musical radiation or sonification were released on September 22 by NASA चंद्र एक्सरे सेंटर। और ये भी बहुत बड़ी साइंटिफिक न्यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे साइंटिफिक न्यूज़ की तरफ जो कि है अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोलॉजिस्ट ऑल द विजिबल मटेरियल इन द यूनिवर्स इज merrily floating in a vast sea of dark matter, particles that are invisible but nonetheless have mass and exert a gravitational force. Dark matter's gravity would provide the missing glue that keeps galaxies from falling apart and account for how matter clung together to form the universe reach galactic trajectory. The proposed experiment in which a billion Miller-sized pendulums would act as a dark matter sensors. ये भी बहुत बड़ी साइंटिफिक न्यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं ऐसी साइंटिफिक न्यूज़ की तरफ। Now researchers from the Harvard John A. Pounceler School of Engineering and Applied Sciences have unraveled potential mechanisms behind the healing power of EVs and demonstrated their capacity to not only revive cells after heart attack but keep cells functioning while deprived of oxygen during a heart attack. The researchers demonstrated this functionally in human tissue under heart on a chip with embedded sensors. और ये भी बहुत बड़ी साइंटिफिक न्यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं ऐसी साइंटिफिक न्यूज़ की तरफ। The dramatic effect rainfall has on the evolution of mountains landscape is widely debated among geologists, but new research led the University by Bristol and published today in Science Advances clearly calculates its impact, furthering our understanding of how peaks and valleys have developed over millions of years. Its findings, which focused on the mightiest of mountain ranges, the Himalaya, also paved the way of forecasting the possible by the rain. और ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। वहाँ आगे बढ़ते हैं ऐसे न्यूज़ की तरफ। इट्स ग्रेट आइडिया सेज इंजीनियर क्रिस नाइट इन न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया। हिज वर्क्स एट CSIRO, Australia's Natural Resource Agency, didn't contribute to the new work, but he knows about wildlife sensors. A few years ago, he also developed an idea for a tree-powered one. Such systems need only a trickle of power to smell smoke or detect rising heat. और ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं ऐसे न्यूज़ की तरफ। An international traveler just broke the world's record for longest non-stop flight among birds. That is, a bird-tailed godwit just flew for 11 days straight from Alaska to New Zealand, traversing a distance of 7,500 miles, that is 12,000 kilometers, without stopping, breaking the longest non-stop flight among birds known to the scientists. और ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे ही न्यूज़ की तरफ। There were fewer than 100 southern white rhinoceros a century ago. Today there are over 20,000. Sadly, this story only stretches as far as the southern subspecies of the white rhino. With the death of the last male in 2018, the northern white rhinoceros has passed the point where it can be saved naturally. With only 2 females remaining, the subspecies is now classed as functional extinct. और ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है और हमें इस राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली scientific news की तरफ जो कि है What does your blood taste like to mosquito? Researchers recently discovered that the delectable flavor of human blood sends sensory neurons igniting like fireworks in a mosquito's syringe-like tongue, a piercing mouth part called a stellate. Only female mosquitoes feed on blood and only to nourish their developing eggs, otherwise they drink flower nectar to better understand the mosquito's attraction to human blood. ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं आज के इवेंट्स की तरफ। तो आज कौन सा इवेंट है वो देखेंगे। तो आज है नेशनल चॉकलेट कप केक्स डे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जो हमारे कप्स केक होते हैं जो चॉकलेट से बने वाले हैं उनको ये डेडिकेट करता है, जिसका नाम है नेशनल चॉकलेट कप केक्स डे। और इसे हमें इंजॉय करना चाहिए एक डिलीशियस चॉकलेट कप केक से।
नेक्स्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और किसी का बर्थडे होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम हमारे चैनल को विश करेंगे। थैंक यू।